For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Deepti L. Sharma ma'am with us, and she is the author of altogether 9 books. Thank you so much ma'am for once again coming on Reading the Author podcast. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you, Gaurav. Thank you. How are you? Completely fine, ma'am. So, how it feels 2 साल बाद वापस से podcast पे आके? It's great fun, It's good to talk about the books and what went inside my mind when talking. It's kind of a revelation to me also. हमने बहुत पहले सोचा हुआ था कि एक वीडियो पॉडकास्ट भी लॉन्च करते हैं, बट होपफुली वो आपके ही बुक से, आपके ही कर कमलों द्वारा शुरू होना था. दैट्स व्हाई वी आर हियर. I'm so glad. So, मैम, जो लोग आपको पहले से जानते हैं उनको एक साइड रखते हैं. बहुत सारे नए हमारे लिसनर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि लिसनर्स आपके बारे में और कुछ जान सकें. एंड ये जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आप ये राइटिंग की जर्नी कैसे आपने शुरू की. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी नाइस ऑफ यू टू अज्यूम कि लोग मुझे जानते होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Okay, let us not give me a false sense of greatness. I'm a very ordinary person, not at all famous as an author. So I would very much like to interest people into knowing about my books. So just to give you a brief about me, I am not at all from the world of literature. I am an outsider here. I hold a degree of doctorate in ecology. I'm a biodiversity student and I go on treks and tours and give my environmental consultancy. So my world has largely been that of writing scientific reports and scientific research papers. For a couple of years, I had worked as a scientist with an institute called NIRI. So it's actually very strange that I have, drifted into writing. But I always had a love of literature. Even as a young person, I used to read a lot. And reading a lot instilled in me the, writing way of expressing myself. So when I was doing my PhD, I had a lot of free time in hand. And I felt I could, express myself through writing. So that was when I translated Chandrakanta. And I wrote my first short story and some blogs. But then, writing never took a front seat with me even after that. So about 15 years later, when the lockdown started, it was then that, I thought I should take writing a bit more seriously, give it a shot. So that was when, Extremely and Chandrakanta I had put on Kindle as ebooks. Yeah. But then when during lockdown, 3 of my books, actual physical books, came out through traditional publishers. So Chirnaveen Mahabharat, for which we had connected last, that was a product of the lockdown. And 2 of my storybooks for children, Gullu and Nanaya series, it came out through the Target publication. So the aim over there was to interest children in environment and conservation. So the 2 books, they deal with tree plantation and waste management for children. And while I was at it, after the lockdown ended, I realized that writing is too good a mode of expressing myself. And I felt I was getting good at it. With practice, you get good with anything. Definitely. So I felt that I am in a unique position in which I can write about ecology and interest the common man in it. When I say common man, I say the individual who has not trained himself into the science of ecology or environmental sciences. But I feel that these sciences, ecology, environmental science, they need not remain in the realm of hardcore science, but should come out and become a little more, I would say, use the word diluted maybe, in the sense that I will not use a lot of technical terms. I will not use a lot of frightening long scientific names, those Latin ones. But I would still talk plain horse scientific sense in a manner that it is more understandable and readable and interesting to common man. Right? Okay. And the reason behind writing is all this is because I feel that
the world needs a lot more foot soldiers in the battle to, save Earth than currently we have. And to interest more people in the field, especially children and young adults, we need to help them understand the topics better and to develop an empathy for those things, right? If I don't, I will never even think about doing anything about it. Interest jagane ki jo baat hoti hai. Okay. So think of these books of mine, the later ones, the Gullu and Anaya series and the Virar Shivram series we are going to talk about now, as an ecologist's effort to raise eco-consciousness among the readers through, leaving her comfort zone of science and dry scientific writing into something which is completely outside her area of experience, and writing, say, a murder mystery or a thriller which has an ecology angle. Okay. So that is in a nutshell what I wanted to talk about my writing journey. Okay. So what I can especially feel like, हमारे viewers भी और listeners भी काफ़ी interested होंगे जो भी इस podcast को देखेंगे, like in a era जहाँ पर ना Zoom का जो background होता है, Google Meet का जो background होता है, वो भी book libraries का हो गया या फिर Moon का हो गया, या अभी मैं उसमें search कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी कि वो एक beach का हो गया, कोई scene है, या ऐसे चीज़ें होती हैं. उस जगह पे आपने चूज़ किया है, ये एक नर्सरी है, ये नर्सरी है. Yes, Gaurav. आपने ये स्पेशली नर्सरी क्यों चूज किया? लाइक इट वाज समथिंग जो मैं स्टार्टिंग से चूज करना पूछना चाह रहा था, बिकॉज काफी चीजें हम लोग चेंज कर चुके हैं. इनफैक्ट मैंने भी अपने बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है, सो ब्लर करने के बजाय दिस व्हाई दिस नर्सरी? So this nursery is my own. I'm very proud of it. We have named it Urban Eco Nook. And the idea is ki it's in Thane, in a highly urbanized area. See, we cannot prevent cities from coming up, right? The world is urbanizing. But what we can do is to ensure that we have an ecological corner in every city. The more the merrier. So hence the name Urban Eco Nook. And I try to hold as many of my video interviews in the nursery so that people can see it and they like it. We are trying to open more nurseries in other corners of the city also. Let's see what happens, how it pans out. But this is my green venture. In fact, it quite resides also with the book जो भी हम बात करने वाले हैं, that eco thriller series जो है हमारी. So ma'am, like the book is released and it's really doing well because काफी लोगों ने Amazon पे reviews वगैरह भी डाल चुके हैं. But still after listening to this podcast, many people जो कि इसमें interested होंगे because काफी fresh topic है. अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हमने सुना कि eco thriller कोई चीज़ है या फिर बुक्स को या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी चीजें लेके आ सकता है हमारे पास बुक में. ऑथर्स हमारा कोई वो भी जिसने एनवायरनमेंट इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी डल सब्जेक्ट, अनफॉर्चूनेटली अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, एंड पीपल डोंट रियलाइज इट कैन बी सो डिफरेंट. When it comes to environment ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस अपनी बुक्स में environment के बारे में पढ़ा होगा अपने स्कूल डेज में, है ना? नॉर्मल वो भी अभी रिसेंट हुआ है इन योर जनरेशन में भी, बिकॉज हम लोग के टाइम में तो वो भी नहीं था. We were the generation which were brought up without those mandatory ecology, environmental science chapters. So yes. So what exactly they can expect? So what they can expect from this book? अगर आप कुछ insight share कर दें, like what they can just this book will unfold in their life or something like that, so that would be very helpful. See, I'll tell you very frankly, these are not life-changing books. I don't claim to be a life coach or something. Okay. So the concept is that during my consultancy projects, there is a lot of time when we have to speak to people about environmental awareness raising. Very important topics under the Swachh Bharat Abhiyan. We had once upon a time worked with 5 different cities, and we had at least addressed 1.223 lakh households door to door, in which we had spoken to people about what to do with their waste, how to segregate it, how to compost it, a lot of confusing things in that, right? And then we talk about what people should plant in their gardens, species that will attract birds, that will attract butterflies, or to city municipalities what they should not go for exotic species but the native ones. So what I realized was that all this awareness raising and all that
if it's superficial, it does not really impact people. It becomes one more topic of lecture for them, which is not really inculcated. You know, आगे ज्ञान देने. लोग वैसे ही परेशान है, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए. Right? So I realized that, you know, I have to give this message in a different manner, in a more subliminal manner, if I may say so, in a more indirect manner. So for the readers of my book, they should expect a good story, a good murder mystery, which is clean. I have tried to keep all violence and unnecessary erotica out of it so that even young adults can read it. And during that reading, a lot of stuff will be absorbed by them even without knowing it. You know, there'll be one side character who will be an ecologist who will probably talk about a desert ecosystem and saying कि अरे यार ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं, desert के animals मर रहे हैं, something like that. Or there'll be one environmental scientist who will be ranting कि यार तुम लोग water conservation के बारे में सुनते नहीं हो. But there'll be a side character, probably, you know, just once or twice those dialogues will come. So, but that topic will be there. Somehow it will be threaded into the plot, and while you are enjoying the story with normal characters who have murder on their mind and there are suspects and there are clues and you have to find out the solution to the puzzle, there's a detective, of course, but in the middle of all this, that thread will be running in each book. So basically it's all about related to like how easily one can relate to these topics and can implement in their life, right? Absolutely. I've tried to make it completely non-preachy, non-lecturish, and as interesting as possible. Okay. But मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे लेट्स से कि किसी ने बुक पढ़ी, किसी ने नहीं भी पढ़ी, यू नो, हम दोनों साइड लेके चलते हैं, ठीक है? तो जिसने पढ़ी उसने बहुत सारी चीज़ें कर ली अपनी लाइफ में, लेट्स से किया नहीं, एक चीज़ भी कर ले तभी बहुत बड़ी बात है. बट व्हेन इट कम्स टू यू, लाइक आप तो बहुत सारी चीज़ें जानते होगे, सब करते होगे, बट जैसे हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं जो यू नो कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, यू नो, वी ऑल जस्ट नो कि अगर वाटर का टैप ऑन है तो उसको बंद कर दो, वो थोड़ा सा पानी गिरने से बच जाएगा, एंड अगर गार्डन में पानी दे दिया करो, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें, यू नो, गर्मी के मौसम में पौधों को भी पानी चाहिए होता है, ये सारी बातें हमें पता है, ये इतना तो हम जानते हैं, ये हो गया. फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देनी चाहिए अगर यूज़ नहीं है उसका, तो ये कुछ चीज़ें. बट उसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप बताना चाहेंगे जो कि एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल ह्यूमन कर सकता है, जिससे कि उसका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत? I'll tell you, सबसे पहले पता है क्या गौरव, the first thing that a normal human being can do is to stop thinking of human beings as at the top of the food chain and the most important creature on this earth. You know, there is a topic which I always speak about when I'm talking about eco-consciousness. It's called eco versus ego. You know, when it is ego, man is at the top of the food chain. When it is eco, man is in the middle of the food chain, realizing that this earth is meant for other species also. आपने कभी Google Earth या Google Map यूज किया होगा ना? Google Earth. Google Earth पे एक टॉप व्यू होता है, you know, आप ऊपर से सब चीजें देख रहे होते हो. And the moment you come to the street view, you see how the perspective changes. तो you know, conservation या ecology या eco consciousness is just about this perspective. You stop looking at ecology from the above as someone who is at the top to someone who is having a street eye view of the whole thing, and then you realize कि जिस तरह से हम इंसान हैं और हमें पसंद है कि हमें कोई recognize करे, you know, we would like to be recognized as XYZ, you as Gaurav, me as Deepti, right? I would hate it if someone says, "Asha, हाँ, Nupur, come here," or if someone says, "Oh, Gautam, come here," right? So just so I say, in this world there are so many species of birds. You know, we have many species of maina, we have so many species of the crow. Can't we just begin by trying to recognize them, trying to understand उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या खाते हैं, घोंसला कैसे बनाते हैं? You know, what I'm saying is, instead of having an interest in Netflix and Amazon and maybe even my book for that matter, let us develop an interest in nature. A beautiful pastime, very good for the mind, very good for the body, very good for the psychology, excellent for conservation perspective. So first that we can do as individuals is to know more. And बहुत कुछ है जानने के लिए, you know, even a lifetime is less. That is why I have started initiating children into biodiversity, because if the earlier they start, the better. You know, instead of recognizing brands,
They should learn to recognize how many types of Definitely. butterflies are In there in fact, the sky. I remember that last time when you were here, you shared that आपके दादाजी या नाना जी, दोनों में से I'm दादाजी, confusing, दादाजी, दादाजी, वो आपको अर्ली स्टेज से ही वो बुक्स का और वो हिंदी लैंग्वेज का वो सारी चीजें आपको करवा रहे थे, यू नो, बिल्कुल, एंड सेम उस वे में आप अब उस चीज को एक ये इको वाले फ्रेंडली में अपने ले जाते हो। एग्जैक्टली, हाँ, दूसरी दिशा बस दिवस बिल्कुल बुक्स के ही बिल्कुल, हाँ, So the first thing that the moment we do this ना गौरव, बाकी हर चीज ना अपने आप it starts to fall into place. You will automatically look for the plants which will attract more birds, which will attract more butterflies. The moment you have started this ecosystem of birds and butterflies, other things will follow. And चीजें अपने आप improve होती जाएंगी. हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो बॉम्बे में या maybe you're in Delhi, right? You're Delhi based. And असम या गुवाहाटी में जो हाथी घूम रहे हैं उससे ना मुझे फर्क पड़ रहा है ना तुम्हें फर्क पड़ रहा है. But कल को if protest starts कि we have to save the elephants of Guwahati by saying no to XYZ project. I mean ऐसा कोई project नहीं आ रहा है. Elephants in Guwahati are pretty happy and very healthy. I love them. But supposing it comes, then I will know that Gaurav sitting in Delhi can vote in favor of saving the elephants because he has been inculcating that eco consciousness that he and the elephant are connected. बिल्कुल बिल्कुल, right? That is a very simple fact, thing. Apart from that, composting your own waste and planting the right species in your garden, saving water, saving energy, ये सब तो lifestyle changes हैं. ये एक personal sustainability formula बोलते हैं इसको मैं. वो तुम्हारे लिए तुम्हारा रहेगा, मेरे लिए मेरा रहेगा. I cannot tell you कि तुम ये करो. But what I can tell you is Gaurav, read about it, form your formula. सोचो तो इस बारे में. यहाँ से तो शुरुआत करो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट यू नो, अगर जैसे आई टीच मैथ्स एंड रीजनिंग एज वेल टू बैंकिंग एस्पिरेंट्स, सो द थिंग इज कि मैं उनको जैसे एक क्वेश्चन के 2-3 वेज बता देता हूँ. लेट्स से कि कोई अगर क्वेश्चन है उसके 2-3 वेज बता देता हूँ, जस्ट इन केस कि आपके एग्जाम में जो भी आपको स्ट्राइक करेगा ना उस टाइम पे, उस चीज से आप वो कर सकते हो. तो वही यहाँ पे भी है कि आपके बस माइंड में एटलीस्ट रहे वो, है ना, सोल पर्पस है कि रहे, आप करो ना करो. हाँ, और जब आपको वो हिट करेगा ना तो डेफिनेटली मैं भी नहीं हूँ यार, मैं भी क्या परफेक्ट हो गई इतने सालों से करके? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है. अभी भी एक पानी का बोतल भूल जाती हूँ उठाना, मान लो, तो बाहर से खरीदना पड़ता है. देन आई फील बैड एंड यू नो दैट फीलिंग बैड इज इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली रियलाइजेशन तो होना ही चाहिए एटलीस्ट. हाँ, जहाँ नहीं से कुछ बेहतर वाली स्टेज पे हम. एग्जैक्टली, एटलीस्ट कुछ तो कर. लाइक अभी 2-3 महीने पहले आई वाज एट, आई गेस हैदराबाद एयरपोर्ट पे था मैं कहीं, तो वहाँ पे ना एक कैंपेन चल रहा था एयरपोर्ट पे. तो वो कैंपेन में कुछ लोग थे, वो दे वर आस्किंग कि अपने कहीं टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ था कि उनके लिए कोई कैंपेन है ऐसा से करिए. उस वॉचिंग, मतलब बहुत दूर से मैं देख रहा था, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, बैठा हुआ था, मेरी डेली थी फ्लाइट. तो कोई भी, मतलब नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज इंटरेस्टेड इन दोस टाइगर रिजर्व या उसको बचाने के लिए. एटलीस्ट यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था लाइक दे वर हैविंग सम पैकेजेस. तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी बिकॉज द पैकेजेस वर स्टार्टिंग ऑफ, जैसे जो डोनेशन के पैकेज थे ना वो अलग चीज़ था, वो 4,000 से स्टार्ट कर रहे थे. तो इवन आई सजेस्टेड देम कि आप ऐसे 4,000 से स्टार्ट मत करो, आप एटलीस्ट बोलो कि आपको जो हो पा रहा है आप दे दो, तो उस वजह से एटलीस्ट लोग आएंगे कुछ भी देने के लिए. लेट्स से अगर मुझे 100 रुपए देने का मन है, तो अब मेरे पास 4,000 नहीं है तो मैं क्या नहीं दे सकता? नहीं तो दे आप, सकते क्या? वो 100 हाँ, रुपए का भी तो वैल्यू है, तुमने सोच के दिया. बिल्कुल. तो अब उनका, जैसे मैं गया था तो उनका बेसिक पैकेज 4,000 था, तो इवन आई सजेस्टेड कि ठीक है, देने को आदमी दे देगा भाई, लेकिन सब लोग नहीं दे पाएंगे. इट्स अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मेनी ऑफ अस. इवन आई विल नॉट बी एबल टू. हाँ, आई टेल यू तो वेरी फ्रैंकली. तो मैं देख रहा था, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन दैट. और वहीं पर अगर किसी और चीज का कोई कैंपेन रहता है तो पीपल वर लाइक अच्छा ठीक है. इनफैक्ट आपने देखा होगा वो अडानी का आजकल एक कैंपेन चला था कुछ महीने पहले, वो स्कैन करके ना वो आपको कुछ वो सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो ऐसे दे रहे थे एयरपोर्ट पे, वहां पे लाइन लगी रहती थी, तो बस स्कैन करना रहता था और उनको सॉफ्ट ड्रिंक. हाँ, you have told the story of my life in probably 2 minutes because I have spent my life trying to interest people into products and services related to the environment. Unfortunately क्या होता है ना कि in the mind of the common public the notion is that things like this should be free. Right? We have taken nature for granted for so long that we want to continue to take it for granted. We don't want to pay for it. So it's a question of need and want, right? We are more willing. It is easier to make us pay for our wants than for our needs. ये एक I think human nature का conundrum है, puzzle है, whatever we can say.
But that's it, it's okay. I have made my peace with the fact that ये इंडस्ट्री अभी बहुत immature है, अभी बिल्कुल बहुत बिल्कुल young है, और हाँ इसको shape करने के लिए बहुत सारे shapers नहीं है. हम्म So बिल्कुल let's see how it becomes. We आई need it वॉज for more लुकिंग एट content. द बुक्स मैम लाइक मैं जी. अमेजोन पे देख रहा था आई गेस दे आर केडीपी रिलीज्ड और कैसे है They're ये all KDP, they're all केडीपी है ebooks. ठीक है हाँ केडीपी जी, होने के हाँ जी. बावजूद भी ना आई वाज वेरी एबल टू सी ये अगर आप लोग भी सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे एक मिल जाएगा एक लोगो है उसके ऊपर लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट इको थ्रिलर सीरीज ये एक Yeah, छोटा सा ये I यहाँ पे have ये gone वैसे ब्लर हो to, जा रहा है यहाँ पे ये एक हाँ लोगो है इसमें छोटा सा हाँ है. सो So I've ये gone to a lot इसके of बारे में trouble to get it trademarked. अच्छा इट इज ट्रेडमार्क Yes, it is India's first eco thriller series. ओके सो ओके हाँ तीनों बुक्स पे है ये जी. सो The हाउ कम fourth book दिस I've started हाँ writing. सो हाउ कम दिस आइडिया केम टू ट्रेडमार्क दिस See, I have been an entrepreneur for the last 10 years now, so I understand how important it हाँ is द to ट्रेडमार्क trademark your logo. ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स सारी Yeah, चीजें one of my practical learnings in this journey. That is why. ओके सो मैम लाइक व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अबाउट दीस काइंड्स ऑफ बुक लाइक हम बहुत कम पढ़ते भी हैं ऐसे बुक्स के बारे में तो आई एम डैम श्योर कि लिखना भी उतना ही मुश्किल होता होगा Oh yes. सो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अबाउट दिस वो भी ऐसी चीज जो कि हमें थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाई जाती है जैसे लेट्स से अब मैं अगर कोई फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ ऐसा अब उसको मैं बोलूँ कि स्टोरी बना के लिखना है या उसको इंटरेस्टिंग बना के लिखना है तो कोई ओम्स लॉ को क्या कर सकता है ना वो ओम्स लॉ ही रहेगा सो बहुत कुछ कर सकते हैं. You can जब हमारे एंशिएंट ऋग्वेद के जो श्लोक है कहा जाता है हाँ कि उसमें धरती से सूरज के बीच का डिस्टेंस जो है वो श्लोक के हाँ फॉर्म में लिखा उस हुआ है, हाँ right? हाँ So we come from a land of storytellers, man. Don't tell that. सो We can आपको make कैसे मतलब formula का श्लोक. क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी इसको लिखने में क्या क्या चीजें थी कैसे रिसर्च वाली सारी चीजें हुई क्या क्या कुछ बता I'll tell you, it's actually very easy, Gaurav, because we don't realize how intertwined so many facets of environment and ecology are in our life. It's just that we don't realize it. You know, it's just that we don't realize it. आप किसी भी इंसान को पूछ लीजिए, वो नेचर से अछूता थोड़ी है. He is not a separate entity from nature. That person, anyone, whether he has been reading ecology or environmental sciences or not, that person is a integral part of nature. Right, and nature is an integral part of our life. हवा के बिना काम नहीं चल सकता हमारा. शुरुआत तो यहीं से हो जाती है. Right. So my bigger challenge was actually on writing a thriller. See, I'll tell you very frankly, I made a very Chirnaveen Mahabharat was an emotional decision. I wrote it for my grandpa. There was no thought behind it. Yeah. Remember, but this book, these series, these books, they have a thought behind. Right. I have actually given them a cold thought. So I felt that to interest people, you know, what are people interested in? Thriller is a genre that people automatically get interested in, or it's romance. So romance is something which I'm very bad at. I can't write good romances. So I said, why not craft a thriller, a puzzle? Okay. So that will interest people. It was the whole idea was to interest people, interest readers, right? So the tougher part was to create that puzzle. You know, in any mystery story, if you have read Agatha Christie's or John Dixon Carr, the whole idea is that the skeleton of the story is a difficult to solve puzzle. You know, some impossible question, अरे यार बंद कमरे में लाश कैसे आई types, you know, but not that CID वाला joke. कुछ तो गड़बड़ है. CID is a joke यार. कुछ तो गड़बड़ है नया. So I wanted to write a serious mystery like Agatha Christie does. I'm trying to copy her, you know. In a way you can say that. So a lot of effort went in crafting the puzzle. You know, which character should be where, what will be the clues. I should be giving good clues, but at the same time I have to, you know, ensure that the reader gets the shock at the end of the plot, you know, how done it and who done it. So that was the more difficult part. The easier part, of course, was to, you know, because I've been doing this work now. I've been going on treks. I've been seeing interesting stuff. I've been preaching people what to do and what not to do about waste and water. So to incorporate all that was a very easy thing. Every day ये का काम है मेरा और. The thing was to craft the puzzle interesting enough so that I am doing justice to the genre of a thriller. You know, if it's an eco thriller, I should not make it more of an eco, yeah. less of a
ऐसा ना लगे कि मोर ऑफ कोई हम कोर्स की हाँ कि किताब वो पढ़ जो रहे हैं rather than I'm falling in my own pitfall of saying that I will not preach and then I'm preaching. Okay. So what's your current writing schedule? Like you mentioned कि आप चौथी बुक भी इस सीरीज में लिख रहे हैं. So what's your current writing schedule? Every day कुछ hours Very devote करते हैं? erratic. Yeah, randomly. I remember you asking this question of me earlier also. I don't have any timetable even now. 2 years have passed and still as erratic as ever. Okay. So my next question to this podcast is, ma'am, like if anybody wants to write in this eco thrill space, like what would be your advices? Like अगर उनको इस बारे में या फिर something related to nature environment कुछ भी लिखना है तो उनको कहाँ से शुरू जी. करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें कुछ? Oh, very difficult question, because I feel that first you have to experience nature, जब तक आप नेचर में जाओगे नहीं, उसकी छोटी छोटी टाइनी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, it will be difficult to know exactly what to write about. There's a lot of drama in nature. There are species with their stories. There's this series of blogs that I do on LinkedIn. Hashtag species have stories. Okay. Every individual plant की कहानी. Okay. They're all individuals like us, So बहुत ड्रामा है बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में, कौन कैसे एक दूसरे को चीट करते हैं, कैसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं. Just to give you an example, there's a bird called drongo, which will mimic the call of a predator, so that कि मान लो एक बंदर है, वो अगर कुछ खाने का सामान लेके जा रहा है तो वो डर जाएगा और वो अपना जो खाना है वो छोड़ के भाग जाएगा. And then this drongo will very smartly go and eat it. Just to give you an example, कल ही पढ़ रही थी इसके बारे में. So hundreds of such examples in nature. Right? Okay. Nature is full of drama. So to anyone who wants to embark on the journey of writing an eco thriller or an eco romance or an eco plot, whatever, should first observe nature, read about it, and visit it, see it, experience it, and realize its glories and wonders, and then the stories will automatically float into their mind, is what I feel. So आपने जैसे इतने साल से, आप ऑलमोस्ट 2 साल बाद तो हम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, सो उससे पहले से अब तक में इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है, बुक इंडस्ट्री? Like book industry, oh my god, I'm not a good person to answer this question. Why? Because I remain an outsider still. Right? Yeah, I mean, of course, if I look at it from a publisher point of view, they are trying to buy a product which they feel should sell, and why should they trust outsider Deepti Sharma, right? So they will of course be more likely to trust someone whom someone of their network has recommended, or comes from the right organization, right institution, has the right degree, or someone who's a celebrity and has a large fan following and all, and then तो बात ही खत्म हो जाती है. दूसरा ये तो हो गए जो big publishers हो गए हैं. With small publishers, I feel it is very difficult to ensure that they'll market your book well. The small publishers will come with their own challenges of marketing. Even it's not their fault. They are facing a huge challenge. कि आपको जगह जगह जाना है, आपको एग्जीबिशंस में बुक्स को लगाना है, आपको Amazon पे उसको ये करना है. So उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो भी मैटर करता है ना. Thirdly, I feel book as a product itself has become very difficult to sell. Okay. People like stories, but that does not translate into people buying books. So most of the books that you'll read, and this is something which I have realized after reading a lot of new author books and after talking to other fellow readers of my circle, and it is something which I have realized that most people do not write books. They write scripts that can be converted into an OTT series or a movie, because that is where the money is. Exactly. Right. So that is something which unfortunately I have not done. Of course, I write with a certain sense of visual because I'm talking about nature. Right. But there is a lot of feeling and emotion also, which you can't actually show on screen. No. But the thought inside the mind of a protagonist is such a critical element. It has to be there, which I don't find in many books, which is why I feel the soul missing in many of the stories I read. So the publishing industry, as you said, I feel it will not change. It will take a long time to change because it will depend on the people consuming the books. They will take a long time to change. True. Definitely, in fact, what I feel like इतने साल से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, it will not change at all.
बिकॉज अभी बहुत टाइम लगेगा एंड द नंबर्स ऑफ ऑथर जिस स्पीड से वो इंक्रीज हो रहे हैं ना, सो एवरीवन इज लाइक उस हिसाब से रीडर्स घटते जा रहे हैं। पब्लिश हो रही है, नाम के आगे ऑथर लगा, दैट्स इट। पब्लिश हो रही है, नाम के आगे ऑथर लगा, दैट्स इट। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप भरोसा नहीं कर सकते मेरी बात पे, 6 महीने में उन्होंने 20-20 किताबें लिख डाली। हो सकता है ना, आजकल इतना आसान हो गया ना, R&D बहुत इजी हो गया है गूगल की वजह से। चैट जीपीटी ने एक अलग आकर के हंगामा बस मचा वो रखा पूरी है। चीजें उसने एक साइड एक अलग से टेक ओवर कर ली है। स्क्रिप्ट वो हो एक गया, अलग ही कुछ भी चीज हो है। गया, वो अपने आप वो लेके कहीं भी कितने हाँ, भी वो अपने वर्ड्स आप हो जा रहा है। तो फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हिच nadir will touch now, I have no clue. But what I feel is ना कि it'll not change, frankly speaking, but its modality will change. We'll continue to love stories, but वो stories हम तक कैसे पहुंच रही हैं, के माध्यम से पहुंच रही हैं, या छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो जाएं, YouTube के चैनल्स क्रिएट हो जाएं, वो कैसे आ रही हैं आपके पास, वो डिफर करेगा। But this human psychology of listening to, wanting to listen to stories will never change. हाँ, definitely, because that's why Big Boss is working. That's why entertainment industry, politics, cricket, everything is working. हाँ, Marketing में हर प्रोडक्ट की स्टोरी बनती है। Okay. So, ma'am, probably my last question of this podcast is like, बहुत सारे नए authors, now we are talking about the whole author community, बहुत सारे नए ऑथर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनका पहला ड्राफ्ट अभी उनके हाथ में, लैपटॉप में, डायरी में, कहीं भी होगा। उन नए ऑथर्स के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? मेरा सजेशन है, सबसे पहले बहुत होप ना रखें। आई एम सॉरी, आई एम स्टार्टिंग ऑन अ नेगेटिव नोट, बट टू एंजॉय द जर्नी मोर देन द डेस्टिनेशन। अभी 2 दिन पहले एग्जैक्टली यही ब्लॉग किया है मैंने मेरे फेसबुक पे। देयर इज अ वेरी ओल्ड सॉन्ग of Wahida Rahman and Biswajit, maybe from Kohra movie. Its lyrics go, राह बनी खुद मंजिल। For an author, वही होना चाहिए। There should be their anthem. The task of writing itself to take so helpful for the author who is actually an overthinker, कि वो बुक, वो ड्राफ्ट उनके हाथ में जो आना है ना, वही बड़ी बात हो जाती है। So they should focus absolutely a lot on writing and the pleasure it gives them instead of what comes afterwards. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Dipti, man. If you do, and do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जैसे Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें दीप्ति एल शर्मा, मैम की बुक्स आ जाएंगी, जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने जानने वाले चैनल से जरूर शेयर करें। Thank you so much, ma'am, for coming on our show once again. It was my honor to be able to host you today. Thank you so much, Gaurav. I really enjoyed the questions and answers. Thank you. Bye. Good day. Good day.